Hello friends, welcome to DCS Learning. Today is October 5 and we will discuss very important question from the different newspaper as well as different website, and that will be very much useful for your UPSC as well as OPSC examination, Odisha Public Service Commission examination, means ISOS dono, for both examination it will be applicable. So daily we will discuss this type of things, means all the current affair type of question, all the concept that you need to know throughout your journey, everything will be discussed in our channel. So first article for today is from Indian Economy, and the article is need for streamlining the insolvency and bankruptcy code. Okay, it is basically about IBC. Okay, insolvency and bankruptcy code. So prelims level, the question may come from IBC, and for mains level, the question will come for the impact of IBC for paper 3. Okay, now let us see what are the measurement that will improve investment. So इसको इम्प्रूव करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को इम्प्रूव करने के लिए पहला कदम यहाँ पे आईबीसी को लिया गया है फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन. सो आईबीसी रिप्लेस इनएफिशिएंट बैंक्रप्सी लॉ, जो भी बैंक्रप्सी लॉ इनएफिशिएंट था उसको आईबीसी रिप्लेस करेगा, एंड हैज़ ट्रांसफॉर्म इंसॉल्वेंसी कर चुका है एक्चुअली, ठीक है, एंड हैज़ ट्रांसफॉर्म इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन इन इंडिया. तो जो भी इनएफिशिएंट बैंक्रप्सी लॉ था उसको रिप्लेस किया और ट्रांसफॉर्म किया इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन को. आईबीसी हैज फोकस्ड ऑन टाइम बाउंड रेजोल्यूशन. टाइम बाउंड रेजोल्यूशन रहता है, लिक्विडेशन को फोकस नहीं करता. किसके ऊपर फोकस करता है? टाइम बाउंड रेजोल्यूशन के ऊपर फोकस करता है. IBC acts as an empowering tool to support companies falling within its ambit. जो भी कंपनी फॉल, देखिए जो भी कंपनी को सपोर्ट चाहिए, इट्स एन एम्पावरिंग टूल टू सपोर्ट दोज कंपनी जो कि इसके अंदर आते हैं. Clear, and it has successfully instilled confidence in that corporate resolution methodology also. It has allowed credit to flow more freely to and within India while promoting investor and investee confidence. इन्वेस्टी और इन्वेस्टर दोनों के कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इंडिया में क्रेडिट का फ्लो को भी यहाँ पे फ्रीली कर पाया है, बढ़ाया है, इंक्रीज किया, प्रमोट किया है आईबीसी ने. IBC is both flexible and dynamic, which makes it impactful given how thinking the concept of an omnibus legislation of its nature actually is. And through the Insolvency and Bankruptcy Board of India, it has established an unprecedented organization that both regulates and develops insolvency policy, assess market realities, etc. Clear? तो अब देखते हैं impact क्या है IBC का. See, first this will be a mains perspective. Now, according to the Resolving Insolvency Index, India's ranking improved to 52 in 2019 from 108. पूरा डबल से भी ज़्यादा मतलब इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना. एंड फर्दर द रिकवरी रेट इम्प्रूव्ड नियरली 3-fold. रिकवरी रेट भी बढ़ गया, सिर्फ 26.5% से 71.6% हो गया. एंड द ओवरऑल टाइम टेकन इन रिकवरी ऑल्सो इम्प्रूव्ड नियरली 3 times एंड कमिंग डाउन फ्रॉम 4.3 years in 2018 to 1.6 year. तो जो रिकवरी टाइम था उसको भी कम कर दिया है. क्लियर? 3 times nearly कम कर दिया. Next, second thing, the impact of IBC is the decriminalization of minor offenses. Now, criminal penalties including imprisonment for minor offenses acts as major deterrent for investor. The government of India is also working toward decriminalization of minor offenses, and this will significantly reduce the risk of imprisonment for action or omission that are not necessarily fraudulent or an outcome of malafide intent. Clear? Now, what are the other legislative measures? Together with IBC, following reforms, 3 suggest major and multi-dimensional effort by the government. First one is the rolling out of the Commercial Code, Commercial Divisions and Commercial Appellate Divisions Act 2015 to allow district court level commercial code. Third is the removal of over 1500 obsolete and archaic laws. What are the way forward for IBC? Now, there could perhaps be a look at institutionalizing and the introduction of a pre-packed insolvency resolution process, and this will also help resolve matter expeditiously outside of the formal court system and allow the resolution even during the COVID-19 altered reality. COVID-19 की वजह से जो सिचुएशन चेंज कर दिया है उसको भी रिजॉल्व करने के लिए, एक्सपीडियंटली रिजॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा कौन? IBC. IBC का वे फॉरवर्ड आपको ऐसे लिखना पड़ेगा अगर मेंस लिख रहे हैं तो.
कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? द IBC has provided a major stimulus to ease of doing business, enhanced investor confidence and helped encourage entrepreneurship while also providing support to MSME. Its further streamlining and strengthening will surely instill greater confidence in both foreign and domestic investor as they look at Indian एज एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन. सो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडिया को अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन मानते हैं तो इन्वेस्टर क्या होगा, उनके ऊपर ग्रेटर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा वो इन्वेस्ट करेंगे, इससे सपोर्ट मिलेगा एमएसएमई को. ऐसा लिख के आप कंक्लूड कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द नार्को टेस्ट एंड द इश्यूज ऑफ कंसेंट, दैट इज फ्रॉम राइट टू प्रिवेसी. Okay, second article, narco test and the issue of consent. See, it will be useful for paper 2, GS paper 2, Indian Constitution, historical underpinning, evolution, feature, amendment, significant provision and basic structure. And for prelims it will come for narco analysis and polygraph test. No importance for means. Means के लिए इतना ज़्यादा important नहीं है, but prelims के लिए है. Involuntary administration of narco or lie detector test is an intrusion into a person's mental privacy. That is Supreme Court judgment in 2010 was held. Okay, 2010 में ये जजमेंट दिया गया था कि इनवॉलंटरी नहीं होगा, उससे पूछ के किया जाएगा, ठीक है ना. तो या फिर वो सोते वक्त नहीं किया जाएगा, वॉलंटरी टाइम में उसका किया जाएगा. क्लियर. ये में जो लाई डिटेक्टर या फिर नार्को टेस्ट. तो वेरियस लाई डिटेक्टर टेस्ट क्या क्या है उसको देख लीजिए. पहला पॉलीग्राफ टेस्ट. A polygraph test is based on assumptions that physiological responses that are triggered with the person is lying are different from that would be otherwise. वो बैठे हुए जगे हुए हम जिसका जैसे टेस्ट उसका कर सकते हैं, सोए हुए उसका टेस्ट हम अच्छे से नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना. ऐसा यहाँ पे बोल रहा है. तो इसमें क्या होता है पॉलीग्राफ टेस्ट में, बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स दैट आर ट्रिगर, जब वो लाए मतलब जब झूठ बोलता है, ठीक है, जब वो झूठ बोलता है उसके ऊपर पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है. एन इंस्ट्रूमेंट लाइक कैर्डियोकॉफ और सेंसिटिविटी इलेक्ट्रोड्स आर अटैच्ड टू पर्सन एंड वेरिएबल्स सच एज ब्लड प्रेशर, पल्सेस, रेस्पिरेशन, चेंज इन स्वेट ग्लैंड एक्टिविटी, ब्लड फ्लो एक्सेट्रा इसको मेजर करते हैं. तो वो उसको कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, वो झूठ बोलेगा तो आप उसको पकड़ सकते हैं. ए न्यूमेरिकल वैल्यू इज असाइंड टू ईच रेस्पॉन्स टू कंक्लूड द पर्सन इज टेलिंग द ट्रूथ और एज डिसीविंग और इज अनसर्टेन. तो ये तो पॉलीग्राफिक टेस्ट था. नार्को एनालिसिस क्या है? इज बाय कॉन्ट्रास्ट इन्वॉल्व्स इंजेक्शन ऑफ ए ड्रग सोडियम pentothal which induce hypnotic and sedate state. In such a state, the subject's imagination is neutralized and they are expected to divulge information that is true. The drug referred to as truth serum in this context and was used in larger doses as anesthesia during surgery and is said to have been used during World War II for intelligence operation. Why this test are so infamous? World War II के टाइम इसको यूज किया गया था, इतना इनफेमस क्यों है? फेमस मतलब जो मतलब अच्छे हुए में फेमस है, इनफेमस मतलब जो बुरे हुए में फेमस है. क्लियर. तो इसको ट्रूथ सेरम भी बोला जाता है. ओके, इसको एनास्थेसिया ड्रग की तरह यूज किया जाता था फॉर लार्जर डोजेस, ठीक है, सर्जरी के टाइम में. तो इसको समझ लेते क्यों इनफेमस है. इन्वेस्टिंग एजेंसी सीक टू एम्प्लॉय दिस टेस्ट इन इन्वेस्टिगेशन एंड आर sometimes seen as being a softer alternative to torture or third degree to extract truth from the suspect, and these tests put into consideration the international norms on human right, the right to a fair trial and right against self-incrimination under Article 20 Clause 3 of Constitution. That's why of this international Constitution, okay, international norm. So that's why ये जो है infamous है. लीगल स्टेटस इंडिया में क्या है? इन सेल्वी एंड ऑर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अर्न्स 2010 सुप्रीम कोर्ट बेंच comprising CJI ruled that no lie detector test should be administered except on the basis of consent. पूछ के करना है भाई, इनवॉल्टरी नहीं करना है, ऐसा बोला गया था. Now those who volunteer must have access to a lawyer and have the physical, emotional, legal implication of the test explained by them by police and the lawyer and the bench said. तो बेंच ने ये बोला था कि उनको जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा पहले से वॉलंटियर को बोल देंगे, समझा देंगे, उसके बाद टेस्ट किया जाएगा. And it is said that guidelines for the administration of polygraph test on an accused published by the National Human Rights Commission in 2000 must be strictly followed. The subject's consent should be recorded before a judicial magistrate. ये कोर्ट ने कहा है, ठीक है. सब्जेक्ट कंसेंट जो है रिकॉर्ड किया जाएगा कि उसने बोला है, ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती भी कर सकते हैं ना, इसलिए रिकॉर्ड किया जाएगा इसको. ना व्हाट आर द लेटेस्ट जजमेंट किया इसके ऊपर? इनवॉलंटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नार्को और लाई डिटेक्टर टेस्ट इज एन इंट्रूजन इनटू ए person's mental privacy. Supreme Court judgment was in 2010
The consequences of such tests on individuals from weaker section of society who are unaware of their fundamental rights and unable to afford legal advice can be devastating. It may involve future abuse, harassment, surveillance, even leakage of the video material to press for a trial by media. ये हो सकता है, ठीक है, फ्यूचर अब्यूज़ वगैरह किया जा सकता है, तो उससे बचने के लिए ये है बोला गया था यहाँ पे, ठीक है, लेटेस्ट जजमेंट में, क्लियर। उसके बाद सच टेस्ट आर एन अफ्रॉन्ट टू ह्यूमन डिग्निटी एंड लिबर्टी एंड हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑल्सो, ठीक है ना। अगर मीडिया में मान लीजिए लीक हो गया तो वो सुसाइड भी कर सकता है अगर उसके खिलाफ कुछ, अब वो मान लीजिए सच्चा इंसान है, उसको गलत आप बोल देंगे तो सुसाइड भी कर देगा, बहुत ज़्यादा उसके फैमिली के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहता है। एन इंडिविजुअल्स डिसीजन टू मेक ए स्टेटमेंट एज द प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइवेट चॉइस एंड देयर शुड बी नो स्कोप फॉर एनी अदर इंडिविजुअल टू इंटरफेयर विद सच ऑटोनॉमी द एपेक्स कोर्ट हैज हेल्ड। लीगल स्टेटस क्या है इसका, आउटकम, लीगल स्टेटस ऑफ इस आउटकम का क्या लीगल स्टेटस है। द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी कन्फेशंस बिकॉज दोज इन ए ड्रग इंड्यूस्ड स्टेट कैन नॉट exercise a choice in answering questions that are put to them, and however any information or material subsequently discovered with the help of such a voluntarily taken test can be admitted as evidence, court said. Thus, if an accused reveals the location of a murder weapon in the course of the test, the police later find the weapon at that location and the statement of the accused will not be evidence but the weapon will be, ठीक है। तो अक्यूज्ड अगर लोकेशन ऑफ मर्डर रिवील करता है तो वेपन के बारे में बोला जाएगा, उसका एविडेंस के बारे में नहीं कुछ बोला जाएगा, ठीक है। वेपन एट दैट लोकेशन अगर है तो स्टेटमेंट ऑफ दैट अक्यूज्ड विल नॉट बी एविडेंस, उसका स्टेटमेंट को एविडेंस नहीं है, वेपन का एविडेंस लिया जाएगा ताकि उसके। नेक्स्ट इज कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट फॉर पेपर 2 इट विल बी यूजफुल। बायलैटरल रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग, दैट मीन्स इंटरनेशनल रिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर डिप्लोमेसी एंड डिसआर्मामेंट के ऊपर ये आर्टिकल है। सो प्रीलिम्स में भी आएगा CND मतलब कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, एंड मेंस में भी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के ऊपर आ सकता है। इंडिया हैज सपोर्टेड द होल्डिंग ऑफ नेगोशिएशंस ऑन ए कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर वेपन्स कन्वेंशन एट ए कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट. It reiterated its commitment to the disarmament of nuclear weapon and in a step-by-step non-discriminatory process. What is about this? You have to know. The CD or the Conference on Disarmament is a multilateral disarmament forum established by the international community to negotiate arms control and disarmament agreements based on police nations in Geneva. The conference meets annually in 3 separate sessions in Geneva, and the conference was first established in 1979 as Committee on Disarmament as a single multilateral disarmament negotiating forum of the international community. It was renamed the Conference on Disarmament in 1984. Next is recent development from India. India has not revised its key principle regarding the new weapons in arsenal. Raksha Mantri means the defense minister has earlier hinted at a possibility of changing the no first use principle by declaring that circumstance will determine the no first use stance. मतलब कभी ये change भी कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने indicate किया है. What is India's stance here? India's stance committed. India believes that nuclear disarmament can be achieved through step-by-step process underwritten by a universal commitment and an agreed multilateral framework. India remains convinced of the need for meaningful dialogue among all states possessing nuclear weapons for building trust and confidence, and India also remains committed to negotiation regarding a fissile material cutoff treaty in the Conference on Disarmament on the basis of report of the Special Coordinator or CD 1299 which dates March 24, 1995. So this was about the nuclear disarmament. Next article is about the Atal Tunnel, world longest highway tunnel, and this will be from road, highway, cargo, air cargo, logistic infrastructure, Bharatmala, LEAP, सेतु भारतम, उसके अंदर ही आएगा. मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स जो आपका GS पेपर 3 में उसके अंदर आएगा. यहाँ पे अटल टनल के ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा और मेंस में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उसका सिग्निफिकेंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं मोदी जी यहाँ पे खड़े हुए हैं, चल रहे हैं, टहल रहे हैं यहाँ पे. तो इसके ऊपर हिंदू में आया था ये वाला कटिंग
इंजीनियरिंग मार्वल, ए लुक एट सम फीचर ऑफ द लॉन्गेस्ट टनल। आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे है, सैटरडे में थे। 9.2 इसका लेंथ, 9.02 किलोमीटर इसका लेंथ है, मतलब 9020 मीटर। शेप इज हॉर्सू शेप ऐसे है, और लोकेटेड बिलो द रोहतांग पास इन व्हिच कनेक्ट्स मनाली टू लाहौल स्पीति वैली। डिस्टेंस विल बी रिड्यूस टू 46 किलोमीटर ओनली। टाइम जो होगा सिर्फ 5 घंटे का होगा। एल्टीट्यूड 3000 मीटर अबव, मतलब 3 किलोमीटर ऊपर मीन सी लेवल से है। अगर ये सी लेवल है तो उसका 3000 ऊपर 3000 मीटर ऊपर है। सिंगल ट्यूब है, डबल लेन टनल है। मैक्सिमम व्हीकल स्पीड यहाँ पे 80 किलोमीटर का रहेगा पर आवर। टेलीफोन फैसिलिटी है हर 150 मीटर की दूरी पे। फायर हाइड्रेंट हर 60 मीटर की दूरी पे, और इमरजेंसी एग्जिट जो है हर 500 मीटर की दूरी पे है। टर्निंग कैवन जो है वो हर 2.2 किलोमीटर पे है। एयर क्वालिटी जो है हर 1 किलोमीटर मॉनिटर होगा। ऑटोमेटिक इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम विद सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है हर 250 मीटर में। आप यहाँ पे देख सकते हैं सीसीटीवी वगैरह हर 250 मीटर में लगा हुआ है। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका फाउंडेशन लेट किया था, इसलिए उनके नाम के ऊपर इसको अटल टनल रखा गया है। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द अटल टनल एट रोहतांग एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 3000 मीटर इन हिमाचल प्रदेश। याद रखिए हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पे मैंने आपको ये बोल दिया, उसका लेंथ 9.02 किलोमीटर। अब इसको किसने बनाया ये इम्पोर्टेंट है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। ये वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, कनेक्ट करता है मनाली टू लाहौल स्पीति वैली। इट प्रोवाइड्स ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू द लैंडलॉक वैलीज ऑफ लाहौल स्पीति, which remains cut off nearly 6 months in a year, as the Rohtang Pass is usually snowbound between November and April. And before the tunnel construction, the Lahore Valley used to remain closed to vehicular movement due to bad weather condition. It reduces the distance by 46 km between Manali and Leh, and the travel time by about 4 to 5 hours. It is expected to boost tourism and winter sport in this region. The tunnel are also significantly from the military logistic viewpoint will provide better connectivity to the armed forces in reaching Ladakh. Next is Indian Missile Program update. Sorya Missile and India's K missile family. This will be useful for paper 3 awareness in the field of IT. Okay, in information technology, then space, computer, robotics, nanotechnology, biotechnology, pharma sector, and health science. So for prelims it will be useful as Sorya Missile, and for mains it will be useful for whole India's missile program. A successful trial of nuclear capable Sorya Missile was conducted in India. Now what is the Sorya Missile? It is a land-based parallel of the submarine launched K-15 missile. It is a land variant of short range SLBM K-15 Sagarika, which has a range of at least 750 km. These ballistic weapons belong to K family, K missile family, codenamed after the APJ Abdul Kalam. उनका जो K है उसके ऊपर है कलाम, which is launched from Arihant class of nuclear submarine. And because these missiles are to be launched from submarine, they are lighter, smaller, and stealthier than their land-based counterpart, and that is Agni series. Now let us understand this missile family of missile and their strategic importance as a nuclear deterrent as well as their recent test. K family of missile. The K family of missiles is primarily submarine-based submarine launched ballistic missile SLBMS, which have been indigenously developed by DRDO. These are named after Dr. Kalam, the central figure in India's missile and space programs, who also served as the 11th president. And the development of this naval platform launched missiles began in late 1990s as a step towards completing India's nuclear triad land, sea, and air-based. Strategic importance of SLBMs. The capacity of being able to launch nuclear weapons submarine platform has great strategic importance in this context of achieving a nuclear triad, especially in the light of no first use policy in India. The sea-based underwater nuclear capable assets significantly increase the second strike capability of a country and thus boost its nuclear deterrence. This submarine can not only survive the first strike by the adversary, but also can launch a strike in retaliation, thus achieving credible nuclear deterrence. The development of these capabilities is important in light of India's relation with the two neighbors, China and Pakistan. Clear. Next is what is the CBD oil? This is from innovation in biotechnology and medical field, that is from paper 3 awareness of IT again. Okay, space, computer, robotics, nanotechnology, biotechnology, pharma and space sector. So innovation in biotechnology and medical science. CBD oil. Now this is called cannabidiol.
सो प्रीलिम्स में ये काम में आएगा, मेंस में नहीं आएगा. These days, these are diverse opinion rising regarding legalization of CBD oil in India after recent controversy rose after the alleged suicide of an actor. Who is that? SR. Okay, SSR. Now, CBD oil is an extract from the cannabis plant, and the two main active substances in it are cannabidiol, or that is called CBD, and delta 9, that is delta 9 tetrahydrocannabinol, THC. इसको क्या कहते हैं? THC कहते हैं, tetrahydrocannabinol. The high that is caused by consumption of cannabis is due to THC, and the CBD, however, does not cause a high or any form of intoxication. CBD oil is made by extracting CBD from the cannabis plant and then diluting it with a carrier oil like coconut or hemp seed oil. What are these effects of cannabidiol? इफेक्ट क्या होता है इसका, उसको कंज्यूम करने के बाद? इट हैज इफेक्ट्स ऑन ब्रेन, प्रिवेंटिंग द ब्रेकडाउन ऑफ केमिकल दैट aggravates the pain and affect mood and the mental function also. It reduces pain and anxiety too. It also reduces psychotic symptoms associated with conditions such as schizophrenia as well as epilepsy. Is it legal in India? देखिए, Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances in 1985 NDPS Act outlaws the recreational use of cannabis. The NDPS Act, however, does not apply to the leaves and seeds of cannabis plant. In case of CBD is extracted from the leaves of cannabis and is technically not legal. CBD oil manufactured under a license issued by the Drugs and Cosmetic Act 1940 can be legally used. However, the use of cannabis as a medicine is not much prevalent in India. Clear? Next, some places that are in news. First one is Kamchatka Peninsula. It will be for GS paper 1, geography feature and their location. Kamchatka Peninsula only we asked in the prelims as well as आपका जो geography optional किसी ने लिया तो उसमें पूछा जाएगा. तो यहाँ पे कामचटका पेनिनसुला आप देख सकते हैं. ये जो कामचटका पेनिनसुला है ये सी ऑफ ओखोस्ट है. यहाँ पे जापान पूरा है, साकालिन आइलैंड है, ये आइलैंड यहाँ पे है, पैसिफिक ओशन इस तरफ, सी ऑफ जापान इस तरफ, सी ऑफ ओखोस्ट नॉर्थ में, नीचे यहाँ पे बेरिंग सी भी है. ठीक है, नीचे जो साउथ चाइना सी वगैरह है, क्लियर, जहाँ पे डिस्प्यूट वगैरह रहता है. उसके ऊपर रसिया है, यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया भी है. क्लियर ना? ये कामचटका पेनिनसुला यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए. An ecological disaster observed is unfolding on a black volcanic beach of the Kamchatka Peninsula in the Russian forest, according to a report. Now, what is this Kamchatka Peninsula? It is a 1,250 kilometer long peninsula in Russia forest. The Pacific Ocean and the Sea of Okhotsk make up the peninsula's eastern and western coastline respectively. Intermediately offshore along the Pacific coast of the peninsula runs 10,500 meter deep Kuril Kamchatka Trench. यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कुरिल कामचटका ट्रेंच. क्लियर ना? ट्रेंच आपको क्या है पता है, मैंने समझाया ज्योग्राफिकल लेक्चर में. एक ओशियन जो बेड होता है वहाँ पे एक मिड ओशनिक रीजस होते हैं एक जगह पे, और एक जगह पे ट्रेंचेस होते हैं, गड्ढा यहाँ पे, जहाँ पे दो प्लेट जो है एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जाता है. ठीक है, यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है, यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा है, ये इस तरफ जा रहा है. ये बिकॉज ऑफ क्यों होता है? कन्वेक्शन करंट की वजह से होता है. ठीक है, ऐसे कन्वेक्शन करंट की वजह से ये होता है. क्लियर? सो आपको पता होगा ट्रेंच क्या है. नाउ द कामचटका पेनिनसुला, द कमांडर आइलैंड एंड द कारागिंस्की आइलैंड constitute the Kamchatka Krai of the Russian Federation. The vast majority of the 3,22,079 inhabitants are ethnic Russians, although about 13,000 are Koryaks. That is a report of 2014 census, you can say. Kamchatka Peninsula contains the volcanoes of Kamchatka. That is a UNESCO World Heritage Site also. Why this is news now? Then when you see animals begin to die in large number and their bodies littering the beach. These include octopuses, seal, sea urchins, stars, crabs and fish. Examination of seawater by the administration has shown that level of phenol and oil compound have spiked in that. That's why they are dying. वो मर रहे हैं because of this. Clear? So this was about the article. Next article is about a species in news. Madhuka diplostemon. New species of plant and animal discovered. So for paper 3 conservation environmental pollution degradation है, EIA means environmental impact assessment. So मधुका डिप्लोस्टेमोन यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मधुका डिप्लोस्टेमोन का फिगर है. The three species long believed extinct have been rediscovered after a gap of more than 180 years from a sacred group in Kolam district. Clear? So scientists have identified the tree as
मधुका डिप्लोस्टेमन family, Sapotaceae, a threatened species of the Western Ghats, whose specimen are first collected in 1835. In 1835, Robert Howard, a surgeon botanist with the East India Company, had collected 3 specimens of the species. Only one mature tree has been found so far, which makes this remarkable discovery extremely valuable from a scientific, environmental, and conservational point of view. Since the species is represented only by one specimen in a single locality, it is eligible to be categorized as critically endangered by IUCN. सिर्फ एक ही जगह पे मिल रहा है, इसलिए इसको क्रिटिकली एंडेंजर बोला जाएगा। तो पूरा का पूरा हमने डिस्कस किया दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया, जैसे कि अटल टनल के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद हमने जो नार्को टेस्ट के बारे में डिस्कस किया, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे मधु का जो है इसके बारे में डिस्कस किया। ऐसा बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। सो फॉर PDF यू कैन जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप, ओके, एंड इन द टेलीग्राम ग्रुप अलॉन्ग विद PDF यू विल फाइंड सम क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स एज वेल आई विल गिव यू सम क्वेश्चन फॉर मेंस ऑल्सो। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और आपको अगर कुछ कोर्सेज चाहिए, लाइक पेन ड्राइव तैयार हो चुका है, पेन ड्राइव कोर्स आप ले सकते हैं, या फिर जो सुपर 50 वाला बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग लाइव डिस्कशन करते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पे, थैंक यू।